Hello dear students, next derivation, electric potential due to a point charge. Okay, this derivation involves integration. Derivation number is 7. So first just understand the definition of electric potential, because we will use this definition to derive the formula. Definition of electric potential is work done by external agent in bringing a unit positive charge from infinity to a point A without acceleration in an electric field. Okay? So now we are considering the situation. There is a positive charge plus Q which is kept at a point O, and this is fixed here. Okay, and we have another charge Q naught, small charge Q naught, which we are bringing from very far, from infinity slowly to a point A. We will calculate the work done in bringing this charge from infinity to this point A, and then electric potential will be the work done that we calculate divided by the charge, because it has to be a unit positive charge, so we'll divide by the charge Q naught to get the electric potential. So entire game is about calculating the work done by the external agent in bringing this charge from infinity to this point. First, let's understand why there has to be a work by the external agent. See, this is a positive charge, unit positive charge, and this is also a positive charge. So if you want this Q naught to move closer to Q, you have to apply a force, because naturally there will be an electrostatic force of repulsion between these two positive charges. So you'll have to push, you'll have to forcefully push this Q naught closer and closer to charge Q, and then get to a point A. That means you have to apply a force. If you are applying a force and you are moving an object, that means you are doing work. So that is the work we are talking about. Okay. Now also understand a slight complication here. This force is not a fixed force. For a fixed force, we can simply do force into displacement and find out the work done. But here, as you come closer and closer, the force will become stronger and stronger, because you know that electrostatic force is a function of distance between the two charges. So as the charge is coming closer, the force is also changing. So how you can simply take a force and multiply by a displacement? So you have to, for a variable force, remember in grade 11, for a variable force, we have to do integration to find out the work done, right? F dot dr. So simply the same thing you will be doing here. Okay, so don't worry, it's simple. So if the charge Q naught has to be brought without acceleration, right? It is in the definition. The charge has to be brought very slowly without any acceleration. External agent has to apply an equal and opposite force as electrostatic force. As simple as that. Because आपको इस object को move करना है slowly closer to this. So without acceleration, you just have to match the electrostatic force. Very small value, large, but overall same. And slowly you push. Because if you apply a greater force, then there will be a net force and the object will accelerate. We don't want the charge to accelerate. We want the charge to come, but without any acceleration. That means your force, the external agent force, has to match the electrostatic force, but opposite in direction. So that means the external force throughout this motion has to be equal and opposite to the electrostatic force, which is F. Clear बात? ठीक? Now force is variable. तो क्या करेंगे हम कोई एक पॉइंट ले लेंगे बीच का, ना तो इन्फिनिटी ना तो ये बीच का कोई पॉइंट है, ठीक है? एट एनी इंस्टेंट वी आर एट बी, एंड लेट्स से द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट बी फ्रॉम ओ इज r dash.
ठीक। अब इस टाइम पे अगर हम फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एफ एक्सटर्नल इट विल बी माइनस, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q नॉट अपॉन R डैश का स्क्वायर, बराबर बात, ठीक। अच्छा, अब इस स्टेज से अगर हम इस Q नॉट को, इफ यू आर मूविंग दिस Q नॉट बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स कॉल दैट dr डैश, ये इतना स्मॉल है कि वी कैन assume the force to be constant in this displacement, तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा अगर हम डिस्प्लेसमेंट करें, तो वर्क डन इज, now this is very small work done because we are moving with a small displacement, so dw would be force into displacement, force कितना था, ये डिस्प्लेसमेंट कितना dr डैश, ठीक, ओके। अब now if we have to calculate the total work done from infinity to this point, so this small dw's, the small dw, we have to integrate, integrate. So क्या करेंगे, to get the total work done we'll integrate this dw from where, from infinity, we are coming from infinity and where we are reaching to a distance r at point A, ठीक। तो यहां से हमने लिख लिया W अपना क्या हो गया, इंफिनिटी टू R, नाउ दिस इज द dW -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R डैश स्क्वायर टू dr डैश, ये वही है जो हमने यहाँ पे लिखा था, देखो dW, उस dW को हमने जस्ट रिप्लेस किया है, करेक्ट। अब यहां से मैथ से स्टार्ट हो गई डियर, फिजिक्स तो खत्म हो गई, अब जो करना है मैथ्स में करना है, तो W इज इक्वल टू, अब ये Q नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस साइन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dr डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, इंफिनिटी टू r, इसको इंटीग्रेट करना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, देखो भाई, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। कैसे इंटीग्रेशन x की पावर n dx होता है, रिकॉल द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, पावर -2, तो क्या हो जाएगा x की पावर n+1, तो -2+1 अपॉन -2+1, तो मतलब ये जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो -1/x, x की पावर -1 को मैंने -1/x लिख दिया बस, ठीक। तो ये चीज क्या आ जाएगी सीधा, यहाँ पे क्या है dr डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, तो जाएगा 1/-1/r डैश, बट मैंने वो माइनस जो है और जो ये माइनस है इनको मिला के कैंसिल कर दिया, तो वो माइनस को मैंने गायब कर दिया इसके माइनस के साथ, ये हो गया 1/r डैश इंफिनिटी टू r, क्लियर। आपको इन लिमिट्स लगाने, एक बार हम r डालेंगे वैल्यू, r डैश r डालेंगे, एक बार इंफिनिटी डालेंगे, तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज एंडिंग टू 0, सो बचेगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई r, दिस इज द वर्क डन। पोटेंशियल क्या आ जाएगा, W बाई Q नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो Q नॉट से डिवाइड कर दोगे, this is this 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. This is the formula for the electric potential at a point which is at a distance R. Electric potential of what? Of a point charge Q. Remember, this is a scalar quantity. This has been calculated from what? Work done. Work done is a scalar quantity. So scalar quantity में जब भी एक charge देख रहे हो तो उसको with sign डालना पड़ेगा. So for a positive charge, potential will be positive. And for a negative charge, potential will be negative. This is by definition. This is how we have defined the electric potential. ठीक है? Thank you very much.